Good morning students, welcome to your GK class. Today we are going to start your 9th chapter, Celebration Around the Globe. All people around the world need to and like to celebrate. They celebrate religion festivals, social events. Most often these celebrations are traditional, lively and colorful. So as we know, everybody on this world celebrates some kind of festivals. In every country there are different kind of celebration. In India we have much more than other countries. So let's read about some of those festivals and where are they celebrated. First one, and unscramble the letter to fill in the blanks as we go on world tour of religion, culture and ethnic festival. So we have to fill in the blanks according to the scrambled word. There are some scrambled words and you have to unscramble it. So the first one is Songkran is celebrated in the Asian country as a traditional beginning of another year from 13 to 15 April. The name of the festival is taken from the Sanskrit word Sankranti, meaning of astrological passage. It coincides with the new year of many calendars of South and Southeast Asia. सो सॉन्गकरन एक तरीके का न्यू ईयर होता है और एक ये साउथ एशियन कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। और जैसे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग न्यू ईयर की डेट होती है, उसी तरह इस कंट्री में सॉन्गकरन को एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। द नेम ऑफ द कंट्री इज़ थाईलैंड। राइट डाउन द स्पेलिंग थाईलैंड, THAINAND, थाईलैंड। सेकेंड वन, La Tomatina is held in the last Wednesday of August in the town of Bunol. People participate in the world's biggest food fight, where more than 100,000 kilograms of over-ripe tomato are thrown in the street. So La Tomatina is a festival in which we which is celebrated on the last week of August. It is the biggest food fight, and in which the people used to throw tomatoes on each other, just like we play in Holi with the colors. So the name of the country where it is celebrated is Spain, SPAIN, Spain. Now the third one, the Rio Carnival is a 4 days street fiesta. The celebration ends just before a period of fasting and abstinence begin for Christians. Carnival is the Portuguese word for carnival. So रियो कार्निवल एक तरीके का मेला होता है। लोग काफ़ी डेकोरेट करके रैली निकालते हैं, and it is quite colorful festival, and it is celebrated in the country of Brazil. Write down the spelling Brazil, BRAZIL, Brazil. Now the fourth one, Halloween. Write down Halloween, HALLOWEEN. Halloween is celebrated in many countries on 31st October, just before the Christian festival of All Saints Day, 1st November, and All Soul Day, 2 November, to commemorate those who have died, saints, friends and relatives. So Halloween is celebrated on the 31st October in the name of the people who died. कोई भी सेंट या फ्रेंड या कोई रिलेटिव की डेथ को याद करने के लिए हेलोवीन सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ द फिफ्थ वन, हनुका इज सेलिब्रेटेड बाय Jews. Write down Jews, JEWS, Jews across the world to commemorate the rededication of one of their holy temple in Jerusalem in 2nd century BC. This festival of light is celebrated over 8 days, and one candle is lit for each day. Write down Jews, JEWS. Sixth one, it is used to celebrate by Koningdang,
means Queen's Day. Little Queen Beatrix was succeeded by her son William Alexander in 2013. It is now celebrated as Koning King's Day and is the biggest national holiday. If you happen to be in Amsterdam, you will experience pure orange madness. The people wear orange and have a lot of fun. It is the name of the country is Holland, HOLLAND, Holland. सो ये सेलिब्रेशन मनाया जाता है जब एक किंग सेलिब्रेशन या क्वीन सेलिब्रेशन होता है वहाँ पे. सो 2013 तक तो ये क्वीन डे मनाया जाता था क्योंकि वहाँ पे क्वीन का राज था. उसके बाद 2013 में जब उनके बेटे विलियम अलेक्जेंडर वहाँ के राजा बने तो ये किंग्स डे बन गया. नाउ द बी पार्ट, complete this table. Here are the some festival and which community or religion celebrate it. You have to fill it here. So the first one is Rosh Hashanah, New Year sometimes in September. So write down Jewish, JEWS, or you can write it JEWISH. Jewish or Jews community celebrate this festival. ये एक तरीके का न्यू ईयर है उनका, रोश हशना. सेकेंड वन इज़ नवरोज़ और नौरोज़, न्यू ईयर थर्ड वीक ऑफ मार्च. ये उनका न्यू ईयर है नवरोज़ या न्यूरोज़ और ये थर्ड वीक ऑफ मार्च सेलिब्रेट किया जाता है. एंड द नेम ऑफ द कम्युनिटी विच सेलिब्रेट इज़ पारसीज. राइट डाउन पारसीज, पर्शियन कम्युनिटी. ओके, द थर्ड वन इज़ Paryushan. The 8-day festival. The 8-day festival मतलब 8 दिन का फेस्टिवल होता है ये. फास्टिंग, रीडिंग फ्रॉम द मोस्ट सेक्रेट टेक्स्ट कल्पुरुस्त्रा. सो इस 8 दिन क्या होता है, फास्टिंग होती है और जो सबसे सेक्रेट टेक्स्ट है इनका, जो सबसे प्योर टेक्स्ट है इनका, उसमें से रीड किया जाता है जिसका नाम है कल्पसूत्र. Sutra. And the community which celebrate is Jain community, JIN, Jain community. Now the fourth one is Bandi Chor Divas, celebration of freedom of commemorate the release of Guru Hargobind from prison, similar to Diwali. So बंदी चोर दिवस क्या होता है, बंदी छोड़ दिवस क्या होता है कि इसके अंदर गुरु गोविंद सिंह के जो रिलीज़ हुए थे प्रिजन से, उससे सेलिब्रेट किया जाता है और ऑलमोस्ट दिवाली जैसा सेलिब्रेशन होता है. द कम्युनिटी विच सेलिब्रेटेड इज़ सिख. राइट डाउन सिख, SIKH. सिख कम्युनिटी ये सेलिब्रेट करती है. द लास्ट वन इज़ ऐश वेडनेसडे. अबाउट 14 days बिफोर ईस्टर marks the start of a period of prayer and abstinence. So ऐश वेडनेसडे होता है वो 14 days ईस्टर के पहले शुरू होता है. एंड द कम्युनिटी विच सेलिब्रेट इट इज़ क्रिश्चियन कम्युनिटी. राइट डाउन द स्पेलिंग CHRISTIEN, क्रिश्चियन community. So I hope you have understood this chapter. Read this chapter again so you can memorize it. We will start our next chapter in the next video. Thank you and have a nice day.